अब ठीक है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। बहुत से लोग सुबह से वेट कर रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, दीदी ने कुछ गुरु पूर्णिमा पे तो कहा ही नहीं। और मैं क्या कहूँ, सुबह से गुरु महिमा ही तो गाई जा रही है। जो कुछ भी गुरु के विषय में बताया जा सकता है वो आप पदों में सुन रहे हैं। जो कुछ समझाया जा सकता है वो आप महाराज जी के प्रवचनों में सुन रहे हैं। तो बचा क्या है बोलने के लिए। लेकिन फिर भी आज गुरु पूर्णिमा है, ट्रेडिशन के अनुसार मुझे कुछ बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ। अभी कुछ देर पहले एक महाराज जी का लिखा हुआ कीर्तन गाया जा रहा था। गुरु चरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धनवार, गुरु चरण धूरि सिर धार, गुरु महिमा अपरंपार। वैसे तो बड़ा लंबा कीर्तन है, किंतु ये पहली जो लाइन है, 2 लाइन का जो पहला स्टैंजा समझ लीजिए। There are 4 things in this line. Number 1, Guru Charan Kamal Balihar. Number 2, Guru Par Tan Man Dhanvar. Number 3, Guru Charan Dhuri Sir Dhar. Number 4, Guru Mahima Aparampar. The essence of all the kirtans, essence of Maharaj Ji's lecture is here in these 4 words. Guru Charan Kamal Balihar. I will explain only these 4 words today. Guru Charan Kamal Balihar. You know, Charan Kamal means lotus feet. Balihar means I sacrifice myself on the lotus feet of Guru. The question arises, why on lotus feet of Guru? We can say, I sacrifice myself on my Guru. He's so merciful, he's so kind, he's giving us so much. But we are saying Guru Charan Kamal Balihar. What's the point of Charan Kamal Balihar? I've explained it before as well. That Charan is the most important part of the being of the saints and God. The most important thing. Why it is most important? Because it is the lowest part of the body of Guru. And when we sacrifice ourselves on Guru's lotus feet, it means we are completely surrendered to you.
Guru's charan are so important. Charan of divine personalities is so important that wherever they go, it is called a tirth. All the tirths are called tirth, the sacred places, the holy places. Why? Because God either descended over there or he lived over there. He stepped over there. That's why those places are called tirth, the sacred places. And our head is the highest part of our body. So when we bow down to the lotus feet of Guru, it means I am surrendering completely unto you. And Sri Maharaj Ji was explaining today in his lectures as well. All what we have to do to attain the grace of Guru is complete surrender, surrender of mind. We have to surrender ourselves. But the point is, why should we surrender to Guru? Why Guru Tattva is so important? You must have heard today in the lecture and before as well that Guru is more important than God Himself. Although, why do we surrender ourselves unto a Guru to attain God realization? But our scriptures are saying, Ram te adhik Ram kar dasa. Bhagavan Shri Krishna himself is saying, Ye mad bhakta hi he parth, न मे भक्तास्तु ते मताः मद्भक्तस्य ये भक्ता ते मे भक्ततमा मताः. He's saying, if somebody is surrendered to me, if somebody is devoted to me, that person who is direct devotee of myself is not that dear to me. Mad bhaktasya ye bhakta. Those who are the devotees of my devotees, Teme bhakta tamamataha. They are the best devotees of myself. Maharaj Ji also sings a ghazal. अगर है चाह हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले तो उनके आशिकों की खाके पाँव में कर गुजर पहले. If you want to attain the grace of God, then first of all you have to be surrendered to their devotees because they are more important for us. And it is explained by Tulsidas Ji Maharaj why Guru is more important than God for us. He said, Ram te adhik Ram kar dasa. Why? Ram te adhik Ram kar dasa. Then he says, राम घन राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा. Ram is like the ocean, although he is ocean of bliss, the sweetest ocean of bliss, Ram Sindhu. But ocean is not useful for us. Why? Because we cannot reach the ocean. Number one reason. Everybody cannot reach the ocean. Number two, if we reach the ocean, the water, if you direct get the water of the ocean, it's not sweet. It's salty water.
You cannot drink it. It's not drinkable. But when the clouds, they take that water, and when they rain, then we can drink it. It is sweet. The water brought by the clouds is sweet. We can drink it. So God is ocean, no doubt. But the sant, the saints are like the cloud who bring the sweet water to us. We cannot taste the sweetness of God ourselves. We hear about God every day. So beautiful of beauty, the sweetness of his beauty, the sweetness of his nature, the sweetness of his virtues. Everything is written so immensely by Maharaj Ji in Prem Ras Madira. But we cannot enjoy because our heart is not ready for that. But when Sri Maharaj Ji explains the sweetness of Sri Krishna, Sri Radharani, then we know a little bit. So God is like Sindhu, the ocean, and the saints are like the clouds. Likewise, Chandan, Chandanataru, the tree of sandalwood. The fragrance of sandalwood is so beautiful, is so famous. And there is the jungle of sandalwood trees. But we cannot be benefited. Why? Because wherever the sandalwood trees are, there are many snakes all the time. They climb. They are on the trees. That's why we cannot reach there. But the air, the wind, it brings the fragrance of Chandan to us. So Lord Krishna, God, is like Chandana Taru, who is full of fragrance. And we cannot take the fragrance, we cannot have the benefit of the fragrance of Chandana Taru. So the saint bring that fragrance to us. We have no idea about God. We are seeing this world because our senses, mind and intellect, they are material. That's why go char jahan lag man jai so sab maya janahu bhai. The reach of our senses, mind and intellect is the material realm only. It cannot think about God. But the saints, they talk about God. They tell that who is God, how is God, why should we worship Him, how should we worship Him. And then He leads also. When we start worshiping God, He leads us. If we have any problem, any doubt, then He solves those problems as well. And gradually He takes us towards God. He He teaches us how to do sadhana. If we are doing any mistake in sadhana, He rectifies it. Lalan, Palan, Taran, in three ways. Sometimes lovingly He teaches us, you should not do that, you should do that. See, this is the benefit of doing that. See, this is not the harm of not doing that. Sometimes He teaches like that. When we don't listen to Him in that way, then He scolds. He scolds us. When we do not listen even then He punishes. Lalan, Palan, Taran. In any way, in every way, He teaches us. He leads us. And we do so many aparadh. Guru is teaching us. He is so much willing to take us
beyond Maya. He wants to release us from Maya. He wants to give us the unlimited divine bliss. And we think, Guruji is saying to do that. Oh, he is very greedy. He is asking for money. Why is he asking for this kind of seva to me? Why is he saying this? Why is he doing that? We always doubt. We doubt in his doings. This is our material mind, and Guru knows these beings, these material beings, they have material mind. It's entirely dirty. Because it is not dirty recently, it is dirty since eternity. We have been thinking about the material things. We have been thinking there is happiness in this material world. That's why when a saint says, no, there is no happiness in this material world, then we doubt. We say, no, he's not right. See, I ate rasgulla and I attained happiness. Who says there is no happiness? I embraced my child and I was so happy. It was so good. Who says there is no happiness? We see something very beautiful. Oh, I was so happy to see that. Who says there is no happiness? Because we have no brain to realize it. That happiness was so temporary. So temporary. You could not enjoy any kind of happiness in this world more than 5 or 10 minutes. It's so temporary. And eventually, dukhdai. Sarvagahu swalpa ant dukhdai. Eventually, you became miserable from everything. So, the Guru teaches us. And Charana Kamal Balihar means I sacrifice myself completely unto our Guru. Sometimes we prostrate in front of Guru. It means I am fully surrendered to you. So what will happen? If we surrender to our Guru, then he will teach us the path of God realization. He will bestow his grace upon us, and then we can realize God. So why? We were also surrendered to Sri Maharaj. We also bowed down to Sri Maharaj many times. We touched his feet. The Guru's feet, the feet of saint is called the abode of all the tirth. Tirth means wherever a divine personality steps becomes tirth. So his feet himself itself is the tirth, is the abode of all kind of tirth. And we touched it. We saw many times, we touched it, we bowed down to the lotus feet of Sri Maharaj Ji, but we could not attain that result which we were supposed to do that. Why? Because surrender does not mean surrender of body only, surrender of wealth only. Guru par tan man dhan var. Although Sri Maharaj is saying, you have to surrender your body, you have to surrender your mind, and you have to surrender your wealth as well. So, if we surrender our body completely, many people are living in ashram, and day and night they are doing nothing except seva. They are doing seva. Is their body surrendered? No. There are many who have surrendered all their money, all their wealth also to Sri Maharaj Ji. Are they surrendered? No. If they were surrendered, then they could have realized God. Now, what is the problem then? When they are living in the ashram doing seva, their body is surrendered, and he said at tan man dhanvar, so at least he surrendered his tan, then why it is not called surrender of tan as well? Because surrender does not mean, yes, you surrender your body, you are doing something with your body.
Surrender of body means no attachment with the body. If you are still attached to your body, you are living in ashram, doing seva, but you are attached to your body. If any kind of seva is giving some pain to you, it's not according to your choice, it's not according to your interest, then you become distressed. You don't want to do that seva. Apart from that as well, we can realize it that we are attached to our body. We want everything. We want seva, we want darshan, we want everything according to our pleasure, our comfort. We should have the comfort as well. Our body is attached. There should be no attachment, then surrendered, then Guru bestows his grace immediately. Here is an example of Uddalak. He was the devotee. He was living in the ashram of Guru. All the time he was doing seva of Guru. Other students were laughing at him. Are you crazy? You came from your home in the ashram to learn something. You never come in the class. You're not learning anything. All the time you are doing some seva of Guruji. What's the point of coming in the ashram then? But he was not answering. Once what happened, it was raining a lot. Then Guruji said that we have to hold that, it is called made, they make a small kind of barrier, the wall of the soil. It is called made. So he said that we have to hold the water. Otherwise, we cannot get the rice. So many students went over there. They were trying to hold that soil as the barrier, but it was flowing. It was not staying there. And eventually, he went. Who was supposed to be the the worst kind of student, very foolish kind of student. All the students were thinking about him that he is foolish. So he went over there. He also tried to hold the soil, but what happened? That it was just flowing. Then he lied down over there. Whole night he was lying over there. In the morning, when Guruji didn't see him, from 4 o'clock, he was serving Guruji, but he didn't see him. Then where has he gone? The student said that we saw him. He went to hold that mitti, but after that we didn't see him. Probably he went somewhere. Guru said, no, he's not that kind of a student. He cannot go anywhere. Let us go and see. Guruji took the lalchan and with all the devotees, he went over there. And he started calling him out, Dalak, Dalak. Yes, Guruji, I am here. Where are you? I am lying down here. If I will stand, the soil will flow. Guruji went over there. He said, stand up. Guruji, if I will stand up, then we cannot hold the water. Don't worry about that. Stand up. He stood up, but he could not because his back was so stiff because of the water. Whole night he was lying down over there. Then Guruji hugged him and he gave all the knowledge to him right away. This is Agya Palan. It is to do something, to do seva for the pleasure of Guru only. Never think about your own pleasure. If you have surrendered your body, then why are you thinking, why this idea comes in the mind? If I get this seva, it will be good. Oh, I was given a very good seva. Or sometimes you say, oh, she is given a very good seva. She's doing the seva of Maharajji's room, and I am giving the seva at the gate, outside gate. Oh, I wish I could also have that seva. We think like that. If this kind of idea is coming in our mind, it means we are not, our body is not surrendered. We have to surrender ourselves, our mind. Main thing is mind. If we have surrendered all our
wealth, and it is in our mind. I surrendered everything. I surrendered all my wealth to Guruji. It means you did not surrender. You surrendered the wealth, but you did not surrender yourself. If you have surrendered yourself as well, then how come it is coming in your mind that I have surrendered? Who are you now? You are surrendered to Guru. The wealth was not yours anymore. Soon as you surrender yourself to Guru, everything which belongs to you, everything, whatever belongs to you, it becomes Guruji's. It was not your anyway after that. Now, how can we think that I gave that much donation? I surrendered this, I surrendered that. If we are thinking, I surrendered that, it means we surrendered the things, not ourselves. We have to surrender ourselves. That's why it is said, mine is the main thing. Maharaj also writes in Radha Govind Geet, श्री गुरु चरणों में गोविंद राधे, तन को ही नहीं मन को भी झुका दे. तन मन धन ये सब दे देना है हमें. मन को झुकाना है, प्रमुख बात तो वही है. तो श्री गुरु चरण कमल बलिहार में हम आपके पूरी तरह से सरेंडर हैं. हमारा जीवन आपको अर्पित है. अब आप जो कहेंगे वो हम करेंगे. और कहेंगे क्या? महाराज जी कहते हैं सेवा 3 तरह की होती है. तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा. तन जा, मन जा, वित्त जा. 3 प्रकार की सेवा होती है. बेस्ट सेवा क्या है कि एक तो ये सेवा है कि गुरु जी ने कहा कि ये सेवा करनी है. हमने बहुत खुश होके, being very very happy, we are doing that seva. Guruji said to do that. Oh, I am so fortunate. Guruji said for some seva to me. He becomes over delighted. The better than that seva is when Guruji just indicates that I need this kind of seva, and we are desperate to do it immediately on any cost. It comes in our mind, I should be the first one to do that seva. And without showing off, we do that seva secretly. That is the second class of seva. The first class seva is that Guruji should not even say that you do this seva. He should not indicate. We should know that now Guruji wants this kind of seva and we are ready to do that. But the best seva is that if you just have an inkling that Guruji will be happy if I do that, this thing will make him happy, then we are desperate to do. We do it secretly without showing off to Guru. That is the best seva. You must have heard the name of Samarth Ramdas Guru, Samarth Guru Ramdas. Once, there was a student of Samarth Guru Ramdas, a Shishya, and he was also very innocent, and he was serving Guruji a lot, and other students were thinking he is foolish. Once Guruji wanted to let the students, other Shishya, know that why I love this boy so much. So he said, he was sitting beside a well. There was a tree, and one branch of the tree was just going towards the well. He said, he said in a way that he was joking, he was laughing. And he says, if somebody goes and sit at the end of this branch, then it will be very funny. It will be full of fun. He was just laughing.
But the words of Guru are not the joke. Whatever he says, there is some secret behind that. When he said कि अगर इस डाल पे कोई बैठे तो मजा आ जाएगा, कि तो सब हंसने लगे, गुरुजी वो तो गिर जाएगा कुएं में, मर जाएगा। तो गुरुजी भी हंस रहे थे और सारे स्टूडेंट्स भी हंस रहे थे। तो इतने में वो जो उनका शिष्य था कल्याण, he stood up and he was going towards the tree. Guruji asked me, where are you going? He said, I'm going to sit on that branch. The Guruji said, are you crazy? Don't you know that soon as you will sit on that branch, at the end of the branch, you will fall in the well immediately and you will die. Don't you know that? I know, Guruji. But that is your pleasure, that is your fun. He was indicating because you are happy to see that scene. You said that मजा आ जाएगा अगर कोई व्यक्ति उस डाल पर बैठे. That's why I'm going there. He said, think about it again. He said, I thought. And when he went over there and sat down on that branch, immediately he fell. He fell off. And there was a good sound also that he has drowned. All the other shishya, they were surprised and they were very uh, upset. What happened? Kalyan has gone. He died. And they were seeing towards Guruji. Guruji was smiling. So what kind of Guruji is this? He has no mercy. That one of his very favorite student, very favorite shishya, has drowned. He has fell down in the well. And he is not saying anything. He is not worried. Rather, he is smiling. What kind of Guruji is this? And then Guruji started talking about something else, not any spiritual matter. He started talking about laughing and talking about something else with the students. But the students were upset. Their mind was still over there. That Kalyan is drowned. He fell in the well. What Guruji is doing? He has no worry. Then he could not control himself. After 5-10 minutes, he said, Guruji, Kalyan has drowned. He fell in the well, and you're not thinking about him. We should try to see what happened to him. If we can take him out, he is alive or he is dead. We have to see that. Guruji sitting, and he was very normally he said, Kalyan. He called him up. Kalyan answered from the well, Ji Guruji. Everybody was surprised he is still alive. He's answering, Ji Guruji. They are very upset. Come out. Then he came out. Everybody was so surprised. How did he come out from the well? And how come he is happy? There is not even a scratch anywhere in his body. And he's more happy than before. He's all right. What happened? Then they asked him that how come you are more happy and you have no any kind of injury, not even a scratch on your body? What happened? He said, actually, when I fell, then I drowned. And after that, I came up. Soon as I came up of the water, I saw there was no water at all. I saw there's something, uh, studded with the beautiful divine gems. It was a beautiful place. And I saw Sri Ram. He was smiling. He was with his Dhanush Ban and he was smiling so sweetly. So I was having the glimpse of Sri Ram. It was my intense desire for a long time that when would I have the darshan of Sri Ram? They were the devotees of Sri Ram. And he said, I had a desire and I was thinking probably this life will go completely wasted because I don't think that I will be able to see Sri Ram. If I don't have the darshan of Sri Ram, my life will completely be wasted. In my mind, I always used to request Guruji as well that please be merciful to me.
I want to see, I want to have the darshan of Sri Ram. But today, when I fell in the well, then I had such a beautiful darshan of Sri Ram that I was looking towards him unblinkingly. I didn't want to come out of the well, but when Guruji called, then I had to come. Agya Palan. I had to come out. So I left that greed of seeing Sri Ramchandji and I came out. But I still remember, I'm remembering the same glimpse of Sri Ram. It's so sweet. See, this is called Agya Palan. This is not attachment in the body. This is called surrender. If we are thinking, oh, if I will sit over the Guruji wants me, he will be happy, but I will die. Then what's the point? I will die immediately. I should not go. I'm not foolish. If we are thinking like that, it means we are attached to the body. So we are not surrendered to Guru. So we have to surrender our mind completely to Him. That I am not mine. I have surrendered myself to Guru. Now nothing is mine. Whatever Guruji says, I have to do that. Balmiki ji became Brahmarshi in the same life. Why? Just he followed the instructions of his Guru Narad ji for such a long time. He did not get up from there. Once he sat down, Mara Mara, he kept on doing that. We have to learn it. This is surrender. Guru Charana Kamal Balihar. I surrender myself at the lotus feet of my Guru. This is the meaning of Guru Charana Kamal Balihar. Guru Par Tan Man Dhan Var. Now my tan, my man, my dhan is not mine anymore. Dhan, if we are attached to dhan, Narsi Bhagat, you must have heard about him. When his house was burned completely, he lost everything, then he started dancing in ecstasy. भलुम थयुम भांगी जंजाल सुखे भजीशुम श्री गोपाल बड़ा अच्छा हुआ सब जल के खा गो अब कुछ है ही नहीं चिंता करने के लिए तो सुखे भजीशुम श्री गोपाल नाउ आई विल sing the glories of God all the time because I don't have to do anything. I have no responsibility. I have nothing at all to be worried about. ये है डिटैचमेंट धन में कोई चिंता नहीं धन में डिटैचमेंट जानी बाई को श्री महाराज जी ने कहा कि सुबह तुमको छोड़ देना है रात में कह रहे हैं सुबह 4 बजे तुम्हें सब वो इतनी वो सेठानी थी ना बड़ा उनका घर सब चांदी के बर्तन बहुत धन धान्य से परिपूर्ण था उनका घर कुछ टाइम नहीं लगाया सुबह 4 बजे उठी और एक झोला लेके निकल गई इसको कहते हैं डिटैचमेंट इसको कहते हैं बलिहार जाना इसको कहते हैं वार देना वार देने का मतलब ये नहीं है कि आपके जितने घर में सामान है सारी संपत्ति धन लेके आप महाराज जी के पास पहुंच जाओ कि लो आपका है वो क्या करेंगे धन का वो हमारी संपत्ति का क्या करेंगे वो नहीं अटैचमेंट हटाना है अटैचमेंट ना रह जाए फिर आप महलों में रहो कोई प्रॉब्लम नहीं अटैचमेंट है अब आप चले गए छोड़ छाड़ के जंगल में और वहां सोच रहे हैं हमारे घर का क्या हो रहा होगा हमारे बच्चे कैसे होंगे हमारा पति कैसा होगा हमारा कोई धन वो बिजनेस कैसा चल रहा होगा तो ये क्या फायदा जंगल में जाने का कुछ फायदा नहीं आप महल में भी रह रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि इतने लग्जरी में रह रहे थे और इतने बड़े संत थे वो इसको डिटैचमेंट कहते हैं तो गुरु पर तन मन धन वार जिसने ये सीख लिया ये जान लिया कि हमारा आज से कुछ नहीं जब हमने समर्पित कर दिया तो कर दिया देखो तो सही एक बार समर्पण करके कि मिलता क्या है हमें विश्वास नहीं शरणागति का ये बहुत बड़ा एक मेन पॉइंट है कि रक्षिष्यतीति विश्वासः
वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर समय करेंगे। अरे जो उनकी भक्ति नहीं करते उनकी भी वो रक्षा करते हैं। तो हम अगर उनके सरेंडर हैं तो हमारी रक्षा वो क्यों नहीं करेंगे? वो हमारी रक्षा कर रहे हैं हर समय। ये विश्वास जब हो जाएगा तो ये धन वन की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। अभी हमें चिंता है, जरा सा परिवार में कोई अधिक चल पड़ा भगवान की ओर तो चिंता हो गई कि ये तो गया हमारे हाथ से, चला गया। खुशी नहीं होती है, रे एक तो निकला हमारे यहाँ जो भगवान का भक्त बन गया। उल्टा सोचते हैं। तो तन मन धन वार, हमें गुरु के ऊपर अपना तन, अपना मन, अपना धन, ये सभी कुछ वार देना है। और गुरु चरण धूरी सिरधार, ये तीसरा पॉइंट है कि गुरु के चरणों के रज को हमें अपने मस्तक पर चढ़ाना है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो गुरु के चरण की धूल है, डस्ट है, हम उसको हर समय चढ़ाते रहें? नहीं, ये मतलब नहीं। गुरु चरण धूरी, जो गुरु के चरण, उनके श्री अंग का सबसे निचला भाग है और उसमें भी जो पैर का तला है वो सबसे निचला भाग है और उसमें भी जो डस्ट लगी हुई है, निचले भाग में भी जो डस्ट लगी हुई है वो सबसे निचला भाग है। तो वो डस्ट का जो कण है, वन पार्टिकल ऑफ डस्ट इज सो फॉर्चुनेट, इट इज टचिंग द फीट, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द सेंट और गॉड ऑफ द फीट। तो वो चरण धूल जो है वो कितनी महान है। बस ये भावना हो जाना कि हम उनके चरणों की धूल हैं, यानी हमारी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है गुरु के आगे, कोई इच्छा नहीं है हमारी, नो डिजायर, नो सिग्निफिकेंस, नो डिमांड, नथिंग। हर समय, all the time, there is only one feeling, that what does he need now, how would he be happy? So we are always ready to do what will make him happy. ये सोचते रहना बस उनकी सेवा में। वो कुछ भी कह दे, एक बड़ा सा आग का पुंज है, देखा गुरुजी ने और मजाक में कह दिया एक कूद जा इसमें, वो मजाक नहीं है। गुरु का कोई शब्द जो होता है वो मजाक नहीं होता, परीक्षा होती। और अगर हम तुरंत कूद नहीं गए उस अग्निकुंड में तो अभी हमारी आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है अभी हमारी, इसलिए हम नहीं कूदे और हमने यूं टाल दिया, अरे गुरुजी मजाक कर रहे होंगे। गुरुजी ने कहा कूद जाओ समुद्र में, एक सेकंड ना लगे कूद जाएं हम समुद्र में। ये सरेंडर है, कंप्लीट सरेंडर है। हमें ये समझना पड़ेगा। एक बार पक्के तौर पे हम समझ लें कि ये क्यों करना जरूरी है, ऐसा करने से क्या मिलेगा। वो मिलेगा जिसे हम अनादिकाल से ढूंढ रहे हैं, वो मिलेगा जिसे पाने के लिए हम जाने कितने योनियों में जा चुके, कहां कहां भटक रहे हैं अनादिकाल से, 84 लाख में, जिसे पाने के लिए वो मिल जाएगा। वो मिल जाएगा हमें केवल गुरु पर विश्वास हो जाए। हमें विश्वास करना है। गुरु चरण धूरी सिरधार, अपने आप को हम उनके चरणों की धूल समझें, उनके चरणों का ध्यान सदा रहे, उनके चरण हमारे मस्तक पर सदा रहें। बस यही कामना रह जाए, यही इच्छा बाकी रह जाए तो इसको शरणागति कहते हैं। और बिना ऐसा किए रहु गणै तपसा नयाति न चेत जया निर्वापणाद गृहाद्वा न
छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैर् बिना महत्पादरजोभिषेकम। द भागवत इज सेइंग कि तुम तप कर लो, जो फल तप से नहीं मिलेगा, जप से नहीं मिलेगा, वो अर्पण वगैरह जो तर्पण वगैरह देते हो उससे नहीं मिलेगा, सूर्य अग्नि आग को जो तुम देते हो जल उससे नहीं मिलेगा, किसी प्रकार के पुण्य कर्म से जो नहीं मिलेगा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य जो महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की धूल में नहा लेने से जो मिल जाएगा तो अनंत काल की बिगड़ी बन जाएगी, अनंत काल के लिए बन जाएगी हमारी बात, अनंत काल के लिए, अनंत काल की बिगड़ी बन जाएगी हमारी। और काम कितना छोटा सा है, खाली सोचना है, विश्वास कर लेना है कि गुरु को एक बार कर दो समर्पित, देख लो समर्पण करके भी ये क्या मिलता है। बहुत जगह किया है समर्पण हम लोगों ने, जब जब जिससे जिससे स्वार्थ हुआ, किसी रूप वाले से स्वार्थ हुआ तो रूप के लिए समर्पण किया, धन की आवश्यकता हुई धन वाले को समर्पण किया, पोजीशन की जरूरत हुई थी पोजीशन वाले को समर्पण, कहाँ कहाँ नहीं हमने समर्पण किया, किसके किसके आगे हम नहीं गिड़गिड़ाए, किसकी किसकी नौकरी हमने नहीं की, अनादिकाल से कुछ कितना कुछ कर चुके हैं, कितना समर्पण कर चुके हैं, कहाँ कहाँ गलत जगह करते रहे, समर्पण किया हमने गलत जगह, गलत जगह ढूंढते रहे, गलत जगह समर्पण करते रहे, इसीलिए हमारी बात नहीं बनी। तो हम जब गुरु के पास जाते हैं तो हमें समझ के जाना है। गीता में लिखा, गुरु कितना भी महान हो, तुम्हें उसका फायदा तब मिलेगा जब तुम 3 बातों का ध्यान रख के जाओ, 3 बातें माइंड में रख कर जाओ। वो 3 बातें क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन, नंबर 1, परिप्रश्नेन सेवया। पहली बात, प्रणिपातेन, समर्पण होकर, समर्पित होकर जाओ, सरेंडर्ड बुद्धि के साथ जाओ, व्यवसात्मिका बुद्धि के साथ जाओ। यानी ये भगवत प्राप्त संत हैं, इनका दर्जा भगवान के बराबर है, और इनकी कृपा दृष्टि अगर मेरे ऊपर हो गई तो इमीडिएटली हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये बुद्धि लेकर जाना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन, जाके क्या करें, कोई तुम्हारे अंदर डाउट है तो आस्क क्वेश्चन, पूछो उनसे। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है परिप्रश्न, परिप्रश्न यानी उत्तम प्रश्न करो, अच्छे प्रश्न करो। अच्छे प्रश्न माने क्या, ये नहीं कि अपनी नॉलेज दिखाने के लिए या बस आ गया चलो भाई क्या पूछें चलो यही पूछ लेते हैं, नहीं, जिससे तुम्हारी गाड़ी रुक रही है, जिससे तुम्हारी साधना में बाधा पहुंच रही है, जो तुम्हारे मन में डाउट है, उसको पूछो। और उसको कैसे पूछो, कि पूछ के उसके उत्तर को ध्यान से सुनो, मन में बिठाओ, और फिर उसके अनुसार ठीक करो अपने आप को। ये क्या, ये एक प्रश्न को 10-10 बार लोग करते हैं और कुछ पालन नहीं करते, क्यों, सुना ही नहीं। पहले कभी पूछा था, याद ही, ये भी याद नहीं कि हमने ये प्रश्न पूछा था उनसे, तो आंसर क्या याद होगा जब यही याद नहीं कि हमने ये प्रश्न भी किया था। फिर वही प्रश्न करते हैं लोग। उसी दिन कभी कभी मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, वे कुछ पूछो, एक ने प्रश्न किया, 15 मिनट बाद वही दूसरा व्यक्ति वही प्रश्न करता है, उसने सुना ही नहीं, पहला प्रश्न भी नहीं सुना, उसका उत्तर भी नहीं सुना। तो ऐसा सुनने का क्या लाभ है, सारे दिन बैठे रहो सत्संग में, कुछ नहीं मिलेगा। परिप्रश्न, हमें जो प्रश्न हम करें उसको, उसका उत्तर को ध्यान से सुने और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें, तब हमको गुरु के साथ रहने का फायदा होगा। और तीसरी बात, सेवाया, सेवा करो,
वो बता ही दिया मैंने आपको। सेवा कैसी होनी चाहिए? गुरु की इच्छा में इच्छा रख के। अपनी इच्छा नहीं बनाओ सेवा की कि हमें ये सेवा मिल जाए, वो सेवा मिल जाए, ये सेवा हम कर लेते हैं, ये नहीं करते हम। नहीं, प्रतिष्ठा का भाव नहीं होना चाहिए सेवा में, गुरु के सुख का भाव होना चाहिए। श्री महाराज जी प्रायः ये बात कहा करते थे, बनगढ़ जब जाते थे, कि जो भी है तुम्हारे पास, जो भी तुम लाए हो, कि हम इस ट्रिप में इतनी सेवा करेंगे, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, वो दे दो सब आते ही महाराज जी। ये क्यों अपेक्षा रखते हो कि इतना हम कॉफी पिलाएंगे तो इतने में हम पिकनिक करेंगे, तो इतने में हम अभिषेक करेंगे, तो हम ये करेंगे? ये तो व्यापार है। ठीक है, चलो किसी बहाने भी तुम करो, यूं नहीं कर सकते हो, चलो ऐसे ही कर लो, सेवा उसका भी लाभ है, व्यर्थ नहीं है वो सेवा, लेकिन वो उत्तम सेवा नहीं है। उत्तम सेवा तो ये जो है दे दो चिट्ठी। अब इसके बाद फिर लोग क्या कहेंगे, ये तो कोई सेवा ही नहीं करता, हर सेवा के लिए मैं, लोग के तुम रिझाने गए हो क्या? लोग क्या कहेंगे उससे हमें क्या लेना देना है? हमारे गुरुदेव क्या कहेंगे, वो क्या फील करेंगे, उन्हें कैसा लगेगा, हमें उससे मतलब है। हमारा कल्याण हमारे गुरुदेव करेंगे, हमारा कल्याण ये संसार वाले नहीं करेंगे, देखने वाले नहीं करेंगे, गुरुदेव करेंगे। तो परिप्रश्नेन हमें उत्तम प्रश्न करना है और सेवाया उनकी सेवा करनी है, तब हमारा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो तुम्हें सही ज्ञान देंगे। जब हमारा माइंड सरेंडर नहीं है, हम उनको सुनने को तैयार ही नहीं है, उनकी आज्ञा मानने को तैयार ही नहीं है, तो बेचारे क्या दें आज्ञा, हमें क्या ज्ञान दें? वो व्यर्थ चला जाएगा सारा, फायदा है, कुछ नहीं होगा। इतना ज्ञान तो दिया महाराज जी ने हम लोग को, ऐसा ज्ञान जो कभी आज तक किसी ने नहीं सुना, वो ज्ञान महाराज जी ने इतने सरल शब्दों में कि गांव का गंवार भी समझ जाए कि श्री महाराज जी क्या कह रहे हैं। बाकी तो जितने बड़े बड़े जगत गुरु हुए, सबने संस्कृत भाषा में अपनी अपनी फिलॉसफी को रखा। महाराज जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने गंवारी भाषा में, सरलतम भाषा में सारे शास्त्र वेदों का समन्वय करके हमारे सामने रख दिया। हमें लाभ क्यों नहीं हुआ? क्यों हम पीछे खड़े हुए? क्यों हाथ मल रहे हैं हम आज भी? ने सुना ही नहीं। वो बोलते रहे, बड़ी तारीफ भी हमने कर दी, वाह महाराज जी तो बड़ा अच्छा बोलते, क्या फिलॉसफी है, क्या बात है, कह दिया हमने, सर्टिफिकेट दे दिया, पालन नहीं किया। तो जो भी हुआ, मैंने हमें प्रमुख बात जो इसमें इन 4 पदों में कही गई, तो हमें उन चारों चीज का, गुरु चरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धन वार, गुरु चरण धूरि सिर धार, गुरु महिमा अपरंपार। उनकी महिमा अपरंपार है, क्योंकि वो हमें उससे मिला देंगे जिसको हम अनादिकाल से खोज रहे हैं, नहीं जानते हैं, उससे मिला देंगे वो, और कोई उसका मूल्य नहीं लेंगे। वो कोई विषय आप पढ़ने जाइए किसी से भी, किसी कोई भी संसारी विषय, तो बिना फीस लिए वो नहीं पढ़ाएगा आप। गुरु तो हमसे कुछ मांगता नहीं, सदा देता ही जाता है, देता ही जाता है। अब हमारी तरफ से जो देरी है उसे हमें पूरा करना है, कि सरेंडर करना है, मन को हमें समर्पित करना है। अब महाराज जी आप कहेंगे अभी तो है नहीं, तो हम उनकी आज्ञा का क्या पालन करें? नहीं है तो क्या, फिजिकली ही तो नहीं है, यूं तो वो आपके साथ हैं ही हर समय, और उनका आदेश केवल इतना ही सा तो है, एक बात कि रोज साधना करो, साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यार। एक तो उनका ये आदेश है, और दूसरा आदेश ये कि साधना के अतिरिक्त भी
जहां जाओ, जो करो, हर समय उनको अपने साथ महसूस। ये दो बातें मेन हैं, इसी में हमारा कल्याण हो जाना है। अगर हम हर समय ये फील कर रहे हैं हमारे गुरु हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमारे हर आइडिया को नोट कर रहे हैं, तो हम गलती करेंगे कैसे? अगर महाराज जी यहाँ बैठे हैं तो आप लोग सब सावधान होकर सत्संग करेंगे ना। महाराज जी चले गए तो कोई बात भी करने लगा, इधर उधर देखने लगा, झांकने ताकने लगा। तो जब वो है ही हर समय हमारे साथ, हर समय, तो हम कोई मिस्टेक करेंगे कैसे? तो हमारा सुधार तीव्रता से होगा। ये प्रैक्टिस की बात है। खाली हम सोच लें, संकल्प ले लें कि आज से हम ऐसा ही करेंगे, हर समय उनकी उपस्थिति को फील करने की चेष्टा करेंगे, तो आप जब ये साधना आपकी जब शुरू हो जाएगी, अब आपसे कोई आके फालतू बात करेगा तो आप टाल देंगे, आप नहीं सुनना चाहेंगे कि आपकी बाधा पहुंच रही है, जो आपका चिंतन चल रहा है हमारे साथ है महाराज जी उसमें बाधा हो रही है, तो आप टाल देंगे। आप काम कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पर तो आपको सबसे बात करनी पड़ेगी, बॉस से भी बात करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं करो, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद ये फील करो, जब भी तुम्हें टाइम मिले, 10 मिनट, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब भी टाइम थोड़ा सा मिले, 1 मिनट का, आधे मिनट का, 10 सेकंड का, तो सोचो वो खड़े हैं। बस इतना ही करना है कि सोचो वो खड़े हैं और वो हमारे आइडियाज को नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं हमें। तो जब हम शुरुआत करेंगे ऐसी साधना की, तो कभी सारे दिन में एक बार 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए ध्यान आएगा, फिर ऐसी साधना करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो हमें और अधिक 2-3 बार, 8 घंटे आप काम करेंगे, 2-3 बार उनका चिंतन हो जाएगा, फिर और प्रैक्टिस करेंगे तो 5-6 बार होने लगेगा, फिर और प्रैक्टिस करेंगे तो 10-12 बार होने लगेगा। ऐसे करते करते हर आधे घंटे बाद, फिर हर 15 मिनट बाद, फिर हर 5 मिनट बाद, और फिर आपकी आदत पड़ जाएगी, आप उनके चिंतन के बिना रह ही नहीं पाएंगे। हर समय आपको महसूस होगा कि वो हैं यहाँ। यही हमें करना है। इसके लिए ना कहीं आना है, ना जाना है, ना कोई धन खर्च करना है, कुछ नहीं करना है। इतनी सरल साधना आज तक किसी भी संत ने बताई नहीं। कलयुग के लोगों के लिए सबसे ज्यादा उत्तम अनुरूप साधना है। हम कोई यज्ञ आदि नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, हम घंटों बैठ के साधना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर को इतनी आराम तलबी की आदत पड़ गई है कि हम तो 2 घंटे लगातार बैठ के साधना भी नहीं कर सकते। तो महाराज जी कहते हैं मत करो, नहीं बैठ सकते हो मत बैठो, जो कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना तो बनाओगे ना, खाना बना रहे हो उनका चिंतन करो, झाड़ू लगा रहे हो, सोचो ये उनका घर है, क्योंकि मैं ही उनका हो गया तो मेरा तो अब कुछ है ही नहीं, उनका ही घर है, उनका ही चिंतन करो। जो काम कर रहे हो उनका चिंतन, किसी से मिल रहे हो, किसी को दे रहे हो, सोचो उसमें बैठे हैं हमारे प्रियतम श्याम सुंदर, मुस्कुरा रहे हैं, हमारे गुरुजी हमारे साथ में हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, सब कुछ प्रैक्टिस से होता है। इसीलिए साधना को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। यही महाराज जी की फिलॉसफी का, सवेरे पदों का, प्रेम रस सिद्धांत का सार है, और इसे हमें सीखना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। और इस जन्म से ज्यादा हमारे लिए और कुछ भी, कोई दूसरा जन्म इतना इम्पोर्टेंट, इतना यूजफुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय हमें श्री महाराज जी की याद है, उनकी फिलॉसफी याद है, उनके आदेश निर्देश याद हैं, और उनसे प्यार भी है। तो अभी अगर हम प्रयास करेंगे कि हम इसी जन्म में उनके आदेश का पालन करके भगवत प्राप्ति कर लें तो इजी है। अब अगले जन्म पे अगर हम डिपेंड करेंगे तो अगला जन्म हमारा कहाँ होगा, कैसा परिवार होगा,
एक बात। दूसरी बात ये कि हम तो भूल जाएँगे महाराज जी को। हम महाराज जी की फ़ोटो देखेंगे, अच्छी लगेगी, उनके फ़िलॉसफ़ी सुनेंगे, अच्छी लगेगी, तो हम कहेंगे काश हम भी इनके टाइम पर होते, तो हमारा कितना लाभ हो जाता। क्योंकि हमें याद ही नहीं कि हम तो थे, बहुत पास थे उनके, लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं, हमने कुछ जानने की चेष्टा नहीं की, चूक गए हम उस समय। फिर कितने ही जन्म इस तरह बीत जाएँगे। इसीलिए ये जन्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक शरीर है, हमें एक-एक क्षण यूटिलाइज़ करना है और महाराज जी के आदेश, निर्देश का पालन करके उन्हें प्रसन्न कर लेना है। वो प्रसन्न हो गए तो हमारी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति। हमारी बात यूँ बन सकती है। यद्यपि जो कुछ भी मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब मेरी अनधिकार चेष्टा है। अधिकार चेष्टा इसलिए है कि साधिकार चेष्टा तो उसकी होती है जो ये सब कुछ प्राप्त कर चुका है, स्वयं करता हो, प्राप्त कर चुका हो। जैसे महाराज जी हैं या अन्य संत हैं, उनकी तो साधिकार चेष्टा है। मैं तो आप लोगों की ही कक्षा में हूँ और जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, वो सब मुझ पर भी लागू होता है। इसलिए मुझे उपदेश देने का यद्यपि अधिकार नहीं है, लेकिन श्री महाराज जी ने एक अयोग्य को भी ये अधिकार दिया है, ये एक ड्यूटी दी है। अधिकार तो क्या, ये एक ड्यूटी दी है महाराज जी ने। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने महाराज जी की इस फिलॉसफी को रखा है। इसमें कुछ अधिक कह दिया हो, अनुचित कह दिया हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। बोलिए श्रीमद सतगुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।